Hi, good evening everyone. I hope everyone is doing great. So जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के क्वेश्चंस हम करेंगे। एक वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है जहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया था। टोटल 5 क्वेश्चंस आर देयर। सो रेस्ट ऑफ द 3 क्वेश्चंस टुडे आई विल बी टेकिंग अप। सो आई एम ट्राइंग टू टेक ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इट्स वेरी इजी। ठीक है, बट अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस अगर हम लोग कर लेंगे सो इट विल बी इजी फॉर अस टू फिगर आउट ऑल द whatever things can come in the exams also, right? So let's start with the first question that I have today here. So as you can see, the question is telling you basically that A cross B, that means when it is written A cross B, that means Cartesian product is already given. A cross B का मतलब क्या है? Cartesian product is already given. ठीक है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट ए एंड बी। मतलब ए सेट मुझे पता करना है कि ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, ये मुझे फाइंड आउट करना है, राइट? लेट्स सी, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। सो इट्स ऑलवेज रिमेंबर, ए क्रॉस बी जब हम कर रहे हैं, व्हेन वी आर डूइंग ए क्रॉस बी, वी आर बेसिकली सेइंग दैट फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए will go and will make relation with both the elements of second set। ठीक है, सो सेट ए होगा क्या, करना क्या है यहाँ पे, जस्ट सी द फर्स्ट फर्स्ट वेरिएबल है। ठीक है, जो फर्स्ट वेरिएबल है वो आएगा ए में। सो एज यू कैन सी इन द ऑर्डर्ड पेयर, फर्स्ट वेरिएबल्स आर ए हियर एंड बी हियर। ठीक है, सो दीज आर द वेरिएबल्स व्हिच शुड कम इन ए। सो बट वन थिंग वी नीड टू कीप इट इन माइंड, जब हम लोग ऐसे देख रहे हैं, सो जब भी वेरिएबल्स रिपीटेड होगा विल नॉट राइट इट 2 टाइम्स। जैसे कि वेरिएबल्स यहाँ पे रिपीटेड है, सो वी ओनली राइट इट 1 टाइम, because the same variable is going to cross, you know it's going to make Cartesian product with the rest of the two variables of set B। ठीक है, सो A को एक बार लिखेंगे और सिमिलरली B को भी एक बार ही लिखेंगे। ठीक है, दो इट इज रिपीटेड सो विल राइट इट 1 टाइम। दिस इज योर सेट A, एंड देन व्हाट विल बी सेट B? A क्रॉस B कर रहे हैं, सो सी, you should be doing what? Again, the second element that you see in the ordered pair, the second element that you see, they will be part of B. So for example, X and Y. Now we don't write it again because it's the same variables are repeating itself. So we don't write it 2 times. We just write it like this. ठीक है, it is as easy as this। बस हमारे को A और B यहाँ से निकालना है। So A will be the, the elements of set A will be the first elements, element of set B will be the second। ठीक है, वेरी क्विकली लेट्स मूव टू द सेकेंड वन। ठीक है, इसमें इतना ही करना था। दिस इज योर आंसर। सेकेंड वन, नाउ सी हियर अगेन अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन विच टॉक्स अबाउट सबसेट्स। सो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इफ वी डू दिस, थ्रू दिस क्वेश्चन, सेट चैप्टर का भी थोड़ा बहुत रिवाइज हो जाएगा, राइट? So let's see what is the question here. It's told you that there is a set A which is 1 2, two elements are there in set A, and in set B there are two elements again, 3 and 4। First they are telling you that write A cross B, and now I hope हमने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस कर रखा है, सो आई होप एवरीवन विल बी एबल टू राइट A क्रॉस B। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो सभी लिख पाएंगे। सो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस will go and will meet 3, and then will go and will meet 4। Similarly, second element of this first set is going to meet both of them, 3 and 4। So 2 comma 3 and 2 comma 4। ठीक है, so first part of this question is done, write A cross B, already done। Now they are asking you how many subsets will A cross B have। ठीक है, अभी we are going to revise very basic thing of chapter set। ठीक है, suppose, let's discuss here first that how to find out this one। If you remember the formula, very good। If you don't remember it, I'll just give you a brief idea। Just see, if suppose a set A has only one element,
ठीक है, बस एक ही एलिमेंट है। सो इसका सबसेट क्या क्या हो सकता है? सो ए का सबसेट होगा इधर एक एम्प्टी सेट और इधर वो सेट इटसेल्फ. So if a set A has only one element, how many number of subset it has? It has two number of subsets. ठीक है. अभी देखते हैं what will happen if a set A has two elements. ठीक है. Suppose a set A has two elements, 2 and 3. How many subsets it will have? First an empty set, then the individual elements. I hope everyone knows how to write a subset and what is a subset. ठीक है. So subset मतलब जो भी एलिमेंट्स हम लिख रहे हैं वो ऑलरेडी ए में प्रेजेंट है. ठीक है, ऑलरेडी वो ए में प्रेजेंट है. सो एम्प्टी का मतलब कुछ नहीं है तो भी वो तो है ना, दिस एम्प्टी इज देयर ना. ठीक है. सो 2 3 एंड देन फाइनली 2 and 3 बोथ विल कम टुगेदर. सो यहाँ पे हो जाएगा 4. एंड बाय द सेम मेथड आई एम नॉट गोइंग टू राइट दैट बिकॉज यू नो दैट क्वेश्चन in the previous chapter you must have already done. If there are 3 elements, so there are going to be 8 subsets. So now looking at the same pattern, you can very easily say that if there are 4 elements here, 4 elements, so the number of subsets will be 2 raised to the power 4, that is 16. Because the formula itself is number of subset निकालने का formula क्या है? 2 raised to the power n. What is this n here? N is the number of element. N is the number of element. So the second part of this question is also done. How many subsets will A cross B have? So you see here A cross B, this whole together will be taken as one element. 1,3 ऑर्डर्ड पेयर है, इसको हम एक एलिमेंट पकड़ेंगे. ठीक है. अभी यहाँ कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है बिकॉज ए क्रॉस बी हो रहा है. सो 1,3 को हम एक एलिमेंट पकड़ेंगे, 1,4 को सेकेंड एलिमेंट पकड़ेंगे, इसको थर्ड एंड इसको फोर्थ. So according to this, there are 4 elements. So that is why number of subset will be 2 raised to the power n. Okay, second part of the question is also done. Now comes the important part that they're asking you also to list them. ठीक है, उनको list भी करना है अभी. ठीक है, list भी करना है, right? So let's do it. ठीक है, थोड़ा सा patience के साथ हम लोग करेंगे यहाँ पे. First of all, empty set आएगा. Then कौन सा आएगा? Individual. 1 3 alone, 1 4 alone, or 2 3 alone, and 2 4 alone. Then आएगा combination of 2. So let's say 1 3 का combination है 1 4 के साथ में, 1 3 का combination है 2 3 के साथ में, 1 3 का combination है 2 4 के साथ में. What else? So 1 का combination तो सबके साथ हो गया, but still there are few more combinations are there. जैसे 1 4 का combination 2 3 के साथ में नहीं है. ठीक है, so we have to write that also. So 1 4 and 2 3, also one more 1 4 and 2 4. ठीक है, let's write it down here only. Okay. Not only that, 1 4 का भी combination हो गया. अभी ये दोनों का combination is also absent. If you look at here, ये वाला combination is also absent and I want to write it here itself so that हमको counting करने में easy पड़े. So I'm writing here. ठीक है. So empty set done, combination of 1 done, combination of 2 done. Now come to combination of 3. So क्या क्या है? 1,3, 1,4 and 2,3. Then 1,3, let's say 1,4 को we don't take, we take 2,3 and 2,4. Second one. Okay, this time 2 times you've taken 1,3. Let's not take 1,3 this time. So 1,4, 2,3 and 2,4. Okay. Now what is happening here?
You can see here that 2 comma 4, 2 comma 4, or let's say 2 comma 3. Every time we are taking 3 times 1 2 comma 3 is coming. Let's not take 2 comma 3 one time, and we take 1 comma 3, 1 comma 4, and 2 comma 4. So 3 का भी कॉम्बिनेशन सारा ही हो गया. Finally, all the 4 combinations. 1 comma 3, 1 comma 4, 2 comma 3, 2 comma 4. So finally, all the 4 elements will come together. ठीक है. So this is the reason why I've taken this question, that this listing is important. ठीक है. Although we have done in the previous chapter, this is a part of the previous chapter, but yes, if it is coming here, everything is related in class 11, 12. Okay, whatever you'll study in class 11, that is going to impact your class 12 also. ठीक है. So be very very particular about it. All right. So let's quickly move to the last question now. ठीक है. Let's quickly move to the last question here. Interesting question, and a bit, you have to little bit. It's a logical question, you can say. ठीक है. The Cartesian product A cross A has 9 element. अच्छा, एक चीज मुझे बताओ. A क्रॉस A का अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, एंड इफ वी हैव 9 एलिमेंट्स, मतलब जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे उसमें 9 एलिमेंट्स आएगा. व्हाट डज इट मीन? ठीक है. इट मीन्स दैट ए के अंदर, ए सबसेट के अंदर 3 एलिमेंट्स होना चाहिए, तभी तो 9 आएगा ना. है ना, तभी तो 9 आएगा. सो 3 एलिमेंट्स will cross with another 3 element. ठीक है. सो A is getting cross to A, ये भी, this is also a valid thing which we can do. सेम सेट का एक दूसरे के साथ में क्रॉस हो रहा है. ठीक है. कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है. नाउ हियर वी नीड टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज द सेट A. ठीक है. फाइंड सेट A एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A. और दिया हुआ क्या है? Out of those 9 elements, some of the elements, like one element is given -1 comma 0 and 0 comma 1. ये दिया हुआ है. ठीक. Let's do one thing here. you know if you remember, we do this. ठीक है. So let's uh, make space for 3 numbers, and here B is nothing but A itself. So A is crossing with A itself. Here also we write 3 elements. ठीक है. Now what are the 3 elements? Now already I have told you कि अगर ये ordered pair दिया हुआ है, so if ordered pair are given, this element, like these 2 elements are part of A. अगर ordered pair दिया हुआ है और A क्रॉस A हो रहा है, so A में -1 और 0 तो है. थर्ड नंबर क्या है पता नहीं है. विल ट्राई टू फाइंड आउट. ठीक है. और अगर सेकेंड वाला सेट लेंगे, सो सेकेंड सेट भी यहाँ पे ए ही है. यहाँ पे तो कोई बी सेट नहीं है, यहाँ पे तो सेम सेट है. ठीक है. सो बी, जो सेकेंड सेट है उसमें कौन से एलिमेंट्स आते हैं? उसमें आते हैं जो सेकेंड में लिखे होते हैं. राइट. सो सेकेंड में क्या लिखा हुआ है? 0 और 1 लिखा हुआ है, और फर्स्ट एलिमेंट एब्सेंट है. ठीक है. सो अभी कुछ समझ में आ रहा है? लाइक दिस सेट एंड दिस सेट बोथ आर तो सेम, दोनों ही तो सेम है ना. सो अगर यहाँ पे -1 है, दैट मीन्स -1 शुड बी हियर ऑल्सो. और अगर यहाँ पे 1 है, सो 1 शुड बी हियर ऑल्सो. है ना. सो द एलिमेंट्स आर -1 0 1, एंड हियर ऑल्सो -1 0 1. ठीक है. क्वेश्चन इज आस्किंग यू, 2 of the elements are given to you, rest 7 elements you have to write.
सो वो क्या क्या होंगे, यू कैन इजिली राइट इट डाउन। -1 का -1 के साथ क्रॉस होगा, 0 के साथ होगा, 1 के साथ होगा। ठीक है। देन 0 का -1 के साथ होगा, 0 का 0 के साथ होगा, और 0 का 1 के साथ होगा। ठीक है। एंड 1 का -1 के साथ, 0 के साथ, और 1 के साथ। आया कितना टोटल? 9 एलिमेंट्स। ठीक है। सो आई एम वेरी श्योर इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद द रेस्ट ऑफ द 7 एलिमेंट्स यू विल बी एबल टू राइट ऑन योर ओन। ठीक है। ट्राई करो एंड आई एम वेरी होपफुल दैट यू विल बी एबल टू राइट इट डाउन। ठीक है। सो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट्स का क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस्ड। नेक्स्ट विल बी गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम रिलेशंस। ठीक है। जहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट आपके चैप्टर का स्टार्ट होता है। ठीक है। बट अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं समझ पा रहे हो तो रिलेशन में भी समझने में भी दिक्कत आएगी। ठीक है। सो दिस इज द बेस, देन ऑन टॉप ऑफ इट विल बी डिस्कसिंग रिलेशन, देन आफ्टर दैट फंक्शन, that will be done in the coming classes. All right. Thank you everyone for joining then. Okay. Hope to see you again in the next class. We'll meet there. Thank you for joining.